Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Hasnan Rashid from Office of Corporate Linkages and Placements. OCLP, Office of Corporate Linkages and Placement at University of Management Technology, under the vision of President UMT, Mr. Ibrahim Hassan Murad, has launched an high impact, iconic, and development focused virtual career week 2021 on the theme of Chasing the Dream Career 2030 to prepare the students and facilitate them to emerge as marketable graduate for the future world. In this career week, students will be oriented about the expectation and emerging trends and challenges of the industry. Furthermore, in this career week has also provided a platform to the corporate sector to introduce their companies and diverse crowd of students and to get pipeline of the talent as your future workforce, as we're having 25,000 plus student network and additionally 20,000 alumni. Talking about specifically today's session theme. So today's theme is time travel, and we are going to talk about the futuristic approach and how we can pop up with the future trends and challenges. For today's session, Plan 9, we invited them here, and Plan 9 is Punjab Information Technology Board's tech incubator established back in uh, August 2012, and they are the pioneer incubation center in Pakistan, striving every day to ensure sustainable growth of early stage tech product based startups in Pakistan. For today's session, we're going to learn about their application process, their incubation facilities. Now they have started the regional incubator and how we can get engaged with them. For today's session from Plan 9, we invited Mr. Mughis Tahir. He is the program manager at Plan 9. So we welcome Mr. Mughis, and we hope it will be a good session for our students. So over to you now, Mr. Mughis. Thank you, Usman. Assalamu alaikum, everyone. I would like to thank UMT and the Office of Corporate Linkages and Placement for having me over here today. My name is Mughis Tahir. I'm the program manager at Plan 9. Hasnan has already given a very good brief on what Plan 9 is and what we've been doing over the past few years, but I'll just be adding a little bit to that. Plan 9 basically started in 2012 with the objective to raise awareness regarding entrepreneurship in Pakistan. So basically, one of the issues or one of the reasons that we started was that we wanted to inculcate the spirit of entrepreneurship within the individuals of Pakistan, particularly the younger lot. That includes fresh graduates, final year students, etc. Because one thing is very common that each year the number of jobs being created in the market is not equal to the number of graduates being produced, whether it be UMT or any other university. तो हम उस चीज के ऊपर फोकस करना चाह रहे थे. We wanted to make these people realize, the audience realize, that instead of being job seekers, they can be job givers in the form of having or creating their own startup. So since we're a part of Punjab Information Technology Board, our focus is on technology-based startups. So technology-based startups का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर कोई बड़ी rocket science involved होनी चाहिए, but उसका crux ये है कि the startup should be utilizing and leveraging technology to build their required product or service. We look upon technology as a tool and as an enabler. Alhamdulillah, since we started, we have incubated more than 200 startups till date, और उनमें से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा और successful ventures हैं जो you might know about them a little bit as well. उसके अंदर if I were to give some examples, there is Wi-Fi Gen, there is Baby Planet, BookMe.pk, and so on and so forth. So again, as I said, it's great to be here. If at any point of time anybody has any questions, they can raise their hand or they can just route them towards Hasnan as well. इस point पे मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा. So we're physically based in Lahore, and we have been since the past 8 years now. A year or so ago, we realized that we receive applications from all over Pakistan. But we realized that when we induct startups, so sometimes they have to relocate from their hometown
to Lahore, because we don't offer virtual incubation. We're focused on, one of our requirements is that the startup has to be physically based for the duration of the incubation in our program. तो उसके अंदर भी रियलाइज के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको रीलोकेट करना पड़ता है. सो ऑब्वियसली देयर कमिंग इन फॉर अ बिगर अपॉर्चुनिटी, बट इट्स अ बिट ऑफ अ हैसल कि दे हैव टू लीव देयर सिटी, उनके लिए इनकन्वीनियंस होती है. सो हमारे जहन में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसको हमने कंसीव किया, एंड देन वी built the project, and now we're launching the project. It's called Regional Plan 9. So Regional Plan 9 के अंदर we are opening 9 incubation centers all across Punjab. So these includes bigger cities like Lahore, Faisalabad, Multan, Sialkot. But we're also going to smaller cities which include Sahiwal, Bahawalpur, DG Khan, Rawalpindi, etc. So that the opportunity is taken to the people which are based in the other cities. So in a nutshell, this is what we're doing. We'll inshallah be launching in Regional Plan 9 in Lahore, Sargodha, Bahawalpur and Multan very, very shortly. ये सब आपका माइक जो है वो आई थिंक उसको अनम्यूट कर लें. I deliberately put myself on mute. So this is all I had regarding the project right now. तो उसके अंदर अब एक और चीज़ ये है कि I understand that इस सेशन के अंदर there are a lot of people who might be students, particularly final year students, and they might be working on a final year project. अब usually देखने में ये आया है, because I can speak from my own experience as well. There was a time when I used to be a student as well. और स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर फोकस यही होता है कि जौन सा भी आपका कोर्स है, बस आप अच्छे ग्रेड्स लें, अपना जीपीए मेंटेन करें और ग्रेजुएट करने की करें. However, we sometimes do not realize and overlook the fact कि जो हमारे final year projects होते हैं, they might hold a lot of potential in themselves. I did my undergrad 10 years ago, और उस टाइम पे हमारा जो final year project था, we were trying, एक project था, we did that and we got a very good grade, and we didn't realize the potential that it had. The course instructor, he later approached us, the group project था, और उन्होंने ये कहा कि यार तुम लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मुझसे ये ले लो 5-6 लाख रुपया, एंड यू गाइस इम्प्लीमेंट इट. दिस वाज वे बैक इन 2010. सो ऑब्वियसली 5-6 लाख की काफ़ी वैल्यू होती थी, ज़्यादा वैल्यू होती थी. So we didn't do that. Why? Because we were of a different mind frame altogether. We didn't realize the potential or the scope that entrepreneurship held in itself. हमें ये लगता था हम जाएंगे MNCs में काम करेंगे, बड़े-बड़े brands के साथ, build our portfolio, etc. So we declined the offer. The same idea was brought in by another startup a few years ago, and he started doing that, and mashallah, his startup became quite successful. और जब मैं उसको देखता था तो मैं ये कहता था कि यार ये किसी ज़माने में ये आइडिया मेरा होता था, बिकॉज आइडिया तो किसी के दिमाग में नहीं कैद रह सकता. आज आप सोचेंगे, कल कोई और भी सोच सकता है. द ओनली पर्सन हु सक्सेसफुल इज जो उस आइडिया को जल्दी इंप्लीमेंट कर लेता. दैट पर्सन गेट्स एन एज in the competitive race. So regarding the final year projects of students, I understand that some of the students might think that ये project तो इसके अंदर इतना ज़्यादा potential नहीं है, या on paper it looks great, but when you start implementing it तो कोई मसले मसाइल हो जाएंगे. हो भी सकते हैं बिल्कुल, because when you on paper is just a plan, but a plan is only 50% of the entire product or service. The rest of the 50% is the execution. तो जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह भी सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे इस सेशन को, मेरी उनसे मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आपके जहन में कोई भी आइडिया है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और वेदर इट्स अदरवाइज, प्लीज उसको एक दफा ट्राई जरूर कर. गिव इट योर बेस्ट शॉट, डू ट्राई इट एट वंस. उससे एक चीज होगी, आपको बाद में किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, वेदर इट्स अ फ्यू मंथ्स डाउन द रोड और वेदर इट्स अ फ्यू years down the road. आप ये नहीं सोचेंगे कि काश मैं वो कर लेता, right? Regardless of whether it succeeds or fails, there are a lot of startups that do not succeed. We only look at the tip of the iceberg. This startup has made it very big. ये हो गया, वो हो गया, etc. However, we fail to realize that there are a lot of startups that don't succeed.
the average success rate in internationally in incubators of startups which pass through their program is around 40%. In Pakistan it's a little higher, so average Pakistan में 60% जा रहा है. तो for example अगर हमने 100 startups incubate किए हैं तो उसमें से 60% जो है वो succeed करेंगे, survive करेंगे, 40% will not survive. But that is okay. The reason is because number one, you get to try योर डिज़ायर, कि जो आपकी ख्वाहिश है आपके दिल में कि मैंने ये आइडिया करना है, ये ट्राई करना है, एक तो आपकी वो चीज़ पूरी हो जाएगी. द सेकेंड थिंग इज कि इवन इफ द स्टार्टअप डज नॉट सक्सीड, उसके अंदर जो आपकी लर्निंग होगी वो उस वो इन इटसेल्फ इट्स कंप्लीटली इट्स गोल्ड. उसकी कोई वैल्यू नहीं है जो आपकी लर्निंग होगी. आई माई सेल्फ हैव डन 2 startups गाहे बगाए फ्रॉम टाइम टू टाइम. Both of them survived for a bit but didn't make it big. लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरी लर्निंग हुई. अब फ्यूचर में एटलीस्ट आई नो 2 ways in not to do a startup. कि इन 2 तरीकों से मैंने स्टार्टअप नहीं करना, मैंने कोई और तरीका जो है वो आजमाना है, या इन 2 डोमेन्स में मैंने नहीं करना, या दिस इज नॉट द आइडिया, द थिंग. Please don't get me wrong, I'm not trying to discourage people from going out and seeking jobs, but the thing is it is kind of like a tried and tested thing that when you have your own startup, the perks and benefits are far more and very different from that of a conventional job. आप conventional job करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में एक certain stability है, आपकी ज़िंदगी में एक certain security है, हर महीने की पहली या 2 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ जानी है. But the thing is, what we often fail to realize is that when we become a part of that system, the corporate system or the job system, उसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि we are bound by certain rules and limitations. कि जी there is a time to go to work, there is a जाने का टाइम है, आने का टाइम etc. नहीं है. There is only a certain percentage of salary increment that we can get in a year. There is only a certain number of promotions or jumps that we can get in a certain time period. However, when you have your own startup, the first thing is you are your own boss. So you set your rules and regulations yourself. आपका दिल चाहे तो आप सुबह 9 बजे काम पे पहुंचे, आपका दिल चाहे तो आप दोपहर 12 बजे काम पे पहुंचे. That is entirely yours. You can choose how much hours can you put into the startup. Obviously, the more time that you put into the startup, the higher the possibility of its success. So वो चीज हो जाती है. And another good thing is then you, instead of you having a boss, you become somebody's boss. So uske andar the thing is that you're giving out jobs, you're contributing to the economy, not just of your country but your own self as well. Or trust me when I say this, जितनी ग्रोथ का पोटेंशियल स्टार्टअप्स के अंदर है उतना किसी भी जॉब के अंदर जो है वो नहीं है. There are certain startups of ours, I'm not going to name names, but if a startup comes and tells you जो आपके प्रोग्राम से ही गुजरा है, बेशक 3-4 साल पहले की बात है, वो आके आपको कहता है कि मेरा साल का जो रेवेन्यू है वो 10 करोड़ से ज्यादा है या 12 करोड़ से ज्यादा है, प्लीज टेल मी कि ऐसी कौन सी जॉब है जो इतने पैसे आपके साल के जो है वो जेब में डाल सकती है. बहुत कम होंगी, बहुत रेयर होंगी, और एटलीस्ट होंगी भी तो you won't be getting them at this stage in life. You will probably need to have 10, 15, maybe even 20 years of experience before you reach that salary bracket, before you reach that position. दूसरी बात ये होगी. तीसरी चीज तो ये है कि there is a certain thing which is called the entrepreneurial mindset. कुछ लोगों का दिमाग एक certain तरीके से चलता है. Their brain is wired that way, that they're constantly thinking of new ideas and new ways to make money, basically. And surprisingly enough, over the years, we've had a lot of applications from people who are already students, और वो कहते हैं कि सर हमारे जिन में ये आइडिया है, हमने इसको करना है. And one very classic example is a startup which is called Autogenie. वो 2-3 बच्चे थे, very young kids. They were in an undergrad program. They are from UMT, if I'm not mistaken. So what they did was कि जब उनका दूसरा साल था, उसके उन्होंने ये आइडिया आया, they wanted to work on it, और उन्होंने अपना सेमेस्टर फ्रीज करा दिया. So basically what they were doing is कि it was a very simple thing that instead of you going to, if your car breaks down या आपकी गाड़ी को मसला दे रही है, instead of you going to a mechanic, the mechanic comes to you
और वो देख लेता है, अगर बेसिक सी चीज़ है वो ठीक कर सकता है तो वो कर देता है, अदरवाइज दे वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारी वर्कशॉप के ऊपर आ जाए. That team of 3 people, they did that for 2 years. Semester freeze हुआ है, उन्होंने 2 साल वो किया. Once it became stable, was growing and going towards growth, it was only then that they went back to the university और फिर उन्होंने अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट की. तो ये परसेप्शन कि आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल एक कांस्टेंट स्ट्रेच पे होनी चाहिए या तोड़ो तोड़ होनी चाहिए, दैट इज अ मिसकंसेप्शन एज वेल. इफ यू बिलीव कि आप अपनी स्टडीज के साथ इस तरह की कोई चीज मैनेज कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू दैट. I know, I have been a part of visiting faculty at one or two universities, और वहाँ पे there were students who used to do that कि वो छोटी छोटी उन्होंने अपने फेसबुक पेजेस बनाए हुए थे. कोई आर्टिस्ट है, पेंट करती है, कोई गेमिंग के साथ लिंक्ड है, वो उसने अपना कुछ किया हुआ है. Some people get merchandise and then they sell it online, etc. So the possibilities are limitless. Right? So you just have to pick and see कि क्या क्या situation है. हाँ, उसके अंदर एक और चीज ये भी है. So I would like to take this platform and praise the universities and education institutes in Pakistan as well, including UMT. उसका situation ये है कि when I finished my undergrad 10 years ago, despite the fact that I had a degree in business studies, there was only one course of entrepreneurship. और वो भी इतना बेसिक और सरसरी सा था कि we hardly got to know what actual entrepreneurship is, let alone dive into this in detail. So now universities are focusing a lot on courses in entrepreneurship, not only courses but specialized degrees as well, which is very very encouraging, because the university is the platform. ये वो जगह है जहाँ से आपकी परसेप्शन चेंज होती है और लर्निंग चेंज होती है. आप स्कूल में होते हैं, स्कूल के बाद आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज तक आपकी लाइफ खेल कूद है. उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो तब भी आपकी लाइफ थोड़ी बहुत ही खेल कूद रहती है और रहनी चाहिए. बट देन इट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू रियलाइज कि अब मैंने चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेना, मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, मैंने एक करियर पाथ चूज करना है अपने लिए. तो देन यू स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग. अच्छा, अगर मैं ये करता हूँ तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसमें स्पेशलाइजेशन करता हूँ तो क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. You'd be surprised to know कि पाकिस्तान में there is a very very big chunk of population that is not working in the domain that they graduated in. उनकी क्वालिफिकेशन कोई और है, उनका एक्सपीरियंस कोई और है, and that is fine wherever life takes you, because हमारे मुल्क के या हमारे रीजन के डायनामिक्स ऐसे हैं that we're looking towards certain skill sets as opposed to degrees. और ठीक है, होना भी इस तरह चाहिए. अगर आपने HR में ग्रेजुएट किया है लेकिन आपको बाद में रियलाइज होता है कि somehow you fit in more into accounting and finance or operations, then why not? Sanan bhai, I'd like to ask if we have any questions at the moment. जी बिल्कुल, यू रिसीव्ड ताहिर भाई. इसमें एक क्वेश्चन आया मेरे पास दैट there any fee you are charging at the Plan 9 for these incubation centers and incubation startups? Acha. Sanan bhai, so the thing is that if you look at most of the other incubators operating in this space, even within Pakistan, they charge a certain equity for their inducted startups. In case the audience is not aware of the term called equity, equity basically it's a certain percentage of shares जो कि startup उस incubator को देता है उनकी services के बदले. However, since day one हमारा ये mandate था कि our entire program will be completely free of cost, free of charge for all of the inducted startups. So we don't take any equity from startups. हम इसको कहते हैं कि हम एक zero equity model follow करते हैं. We don't charge them anything, not even office rent. हालांकि we provide them a working space, an office space for a duration of 6 months, जो हमारी cycle का duration है. But that's completely free of cost. The only thing that we ask and require from the startups in return is कि वो अपना 100% देंगे. They will utilize our program to the best of their knowledge and ability, और वो अपनी motivation को नीचे नहीं आने देंगे.
Thank you, Mukesh bhai. But I have one question here. That आपने कहा जी कि Plan 9 isn't charging anything, और but वो in return ये कहते हैं कि जी कि आप 100% देंगे. We cannot be so sure कि जी कि ये जो स्टार्टअप का आइडिया है ये कामयाब होगा या नहीं होगा. ऑफ कोर्स एवरीवन शुड पुट, जो भी उसका फुल उसका एफर्ट है, उसकी एनर्जी उसके अंदर उसको लगाना चाहिए. बट आफ्टर दिस जो फेट है, ये जो उसका फ्यूचर है, वी डोंट नो. तो अगर इन केस अगर कुछ इस तरह का मिसहैप हो जाता है, तो आई नीड टू थिंग्स फ्रॉम यू कि नॉर्मली एक तो वो डिस्करेज हो जाते हैं, जो बच्चे हैं या जो हमारे यंग स्टार्टअप जो लेकर आते हैं आइडिया. सो आफ्टर द फेलियर, व्हाट इज़ योर एडवाइस कि जी के हाउ टू कॉप विद ये जो उनका आइडिया था वो फेल हो गया, और वो उनको मोटिवेट करने के लिए कि जी वो नए आइडिया पे काम करें, या जस्ट गो बैक टू द कॉर्पोरेट सेक्टर और कोई जॉब ज्वाइन कर लें, कंपनी ज्वाइन कर लें, या किस तरह आप उनको एडवाइस करेंगे. और सेकंड कि जी कि आपने कहा कि वो 100% उसके दे, अगर वो नहीं दे पाते तो व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन. अच्छा हसनैन भाई, सो द थिंग इज दैट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में फेलियर का जो लफ्ज है उसको एक बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी कि अगर आप खुदा ना खास्ता किसी भी चीज़ में फेल हो गए हैं तो बस आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, राइट. बच्चा अगर खुदा ना खास्ता किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज, पेरेंट्स नाराज, टीचर्स अपसेट, बच्चा खुद उसको इतना ज़्यादा हर तरफ से प्रेशर होता है कि क्या. So the same is the case with startups. Just because the startup did not succeed, उसकी multiple reasons हो सकती हैं. Maybe the time was not right for the product or service. Maybe they were just trying to do something which should have been done in a different manner, etc. So the failure of a startup does not matter. What matters is what happens after the failure. So again, failure is just one attempt that did not succeed. However, that does not mean कि आपकी सारी attempts जो है वो खत्म हो चुकी हैं. You literally have unlimited attempts at anything or everything. अगर बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो he or she always gets another chance. अगर स्टार्टअप नहीं चला तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि वो क्यों नहीं किया, एंड देन मेक देम योर लर्निंग्स इंस्टेड ऑफ कि आप उसको अपने सीने का बोझ बना लें. So there are a lot of startups who did not succeed, but then those people went back to the drawing board. They went back to their notebooks. They came up with a different idea. They came up with a bigger idea. They came up with a better idea. And then they came back and then they applied to the program again. And then they got selected in the program again. And they did another startup. हो सकता है वो भी succeed ना हुआ. They always have a third try as well. I understand. So for the younger lot, there's a lot of pressure, particularly from their households कि भाई पैसे क्यों नहीं कमाना शुरू किया अभी तक, ग्रेजुएशन को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नौकरी क्यों नहीं लगी तुम्हारी अभी कि जो तुम कर रहे हो. बिकॉज the concept of startups or entrepreneurship might be a little lost in our हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में. तो उनका यही होता है कि जल्दी जल्दी पैसे कमाओ, स्टेबल हो जाओ, सेटल हो जाओ, ठीक है, टर्म विच इज़ वेरी वेगली डिफाइंड इन आवर सोसाइटी. तो फेलियर शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट. अगर आप ठोकर खा के गिरते हैं तो आप फिर वहाँ पे ज़मीन पे पड़े नहीं रहते, आप उठते हैं, अपने कपड़े झाड़ते हैं और आप आगे चले जाते हैं. दैट इज द सेम केस विद स्टार्टअप्स एज वेल. इफ यू हैड अ सेटबैक, इफ यू डिड नॉट सक्सीड, ट्राई अगेन, डू समथिंग न्यू, जस्ट डोंट गिव अप. That's great. Really impressive thoughts. Okay, I got one question here. What is the seed funding, and how we can attract the seed funding from the market for our particular startup? This is a good question. The concept of seed funding is basically investment or funding that is provided at a very early stage for the early stage of the startup. उस टर्म को कहते हैं सीड फंडिंग. सीड फंडिंग की कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती, उसका कोई फिक्स्ड टिकट साइज नहीं होता. इट कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग between a few 100,000 rupees to millions of rupees as well. And seed funding के multiple sources हो सकते हैं. तो ideally तो हर startup
आपको बूटस्ट्रैप करना चाहिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैप डिक्टेट्स कि आप अपनी पॉकेट से स्टार्टअप के अंदर पैसे डाल रहे हैं. अब आई अंडरस्टैंड कि students at this point of time might not have access to that much financial resources. तो वो क्या करते हैं कि वो अपने कहीं से बोरो कर लिए, वालदैन से ले लिए. कुछ गवर्नमेंट की भी स्कीम्स वगैरह हैं जो लोन्स वगैरह देती हैं, बैंक्स वगैरह भी देती हैं, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो काफ़ी स्टीप हैं. द लास्ट थिंग इज दैट यू गो looking for investors to invest in your startup at the seed stage. But the thing is कि these investors आइडिया स्टेज पे इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल काम है. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. देयर आर वेरी वेरी फ्यू केसेस दैट आई हैव सीन जिनको आइडिया की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मिल जाए, पाकिस्तान में भी और इवन अब्रॉड भी. If you have to convince an investor, you should at least have a working prototype of your product or service. कि ये मैंने चीज बनानी थी. This is what I'm going to make. This is what it is going to look like. Who are these people who act as investors? So there are two terms. One is called angel investors, जिसको जो basically हम individuals को कहते हैं जिनकी थोड़ी deep pockets हैं और उनके पास पैसे होते हैं to invest into startups. And then there are proper organizations which are called venture capital funds, या उनको VCs कहते हैं for short. और उनका काम ही ये है कि there's a group of people जिन्होंने एक पूल इकट्ठा कर लिया होता है पैसों का, और वो उन्होंने या वो खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव रखा होता है who goes around looking for startups, etc. There are a few in Pakistan as well. One is called Fatma Gobi Ventures. Laxon Ventures भी है, Laxon का जो इन्वेस्टमेंट आर्म है, and then a few so on and so forth. तो सीड इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टर होता है उसको आप सीड पे तभी कन्विंस कर सकते हैं जब आपकी प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसका कोई वर्किंग प्रोटोटाइप है. और दूसरा ये कि these people before investing they look in your financials in a lot of detail. So there are literally tons and tons of work regarding your bank statements, आपके accounts, आपके ledgers, journals वगैरह. Everything has to be in order for them to start taking you seriously. आप किसी को भी जाके कहेंगे मेरे पास ये एक ऐसा आइडिया है, ये दुनिया रेवोल्यूशनाइज कर देगा, ये है वो है, they'll be like fine, tell us the idea, tell us what your team is, but also show us the financials. अगर आपने सेल्स वगैरह अभी जनरेट नहीं करना शुरू की, that's fine, show us what your customer base is, make projections for the next 6 months or a year कि अगर हम आपको इतने पैसे दे देते हैं, how will you utilize the money, where will you utilize the money, और हमारा जो ROI है, return on investment, वो कब से आना शुरू होगा और किस तरह से होगा. So there are a lot of things उसके अंदर involved है. This might bring up another question कि मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो हिसाब किताब में कमज़ोर हो. मेरी हमेशा से फाइनेंस से जान निकली है. ठीक है, मैं थोड़ी सी बेसिक अब मैं बुक कीपिंग वगैरह कर लेता हूँ. But the thing is कि I might not be able to make projections for a duration of 6 months or a year, etc. What do I do then? I go looking for a financial analyst who can help me out in this regard. There are a lot of people who do this stuff as services for a certain sum of money. तो उनसे भी राब्ता किया जा सकता है. But we get a lot of queries. Plan 9 gets a lot of queries कि जी मेरा स्टार्टअप है, मैं इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहा हूँ, प्लीज मुझे इन्वेस्टर से कनेक्ट करा दें. However, unfortunately, that is not the way things work. Because we are a part of the government and we are here to provide as much opportunity as possible. But I'm sure everybody understands that only those startups who have been through a certain selection process and who have been inducted at Plan 9 और जिन्होंने यहाँ पे 6 महीने गुजारे हैं या 6 महीने उन्होंने गुजारने हैं, उनका एक first right बनता है in order to be connected to the investors. However, most of these investors are very easily approachable. All it takes is one email to them or their representative and the meeting can be set up. मुकेश भाई, दैट्स गुड. मैं इसी की एक एक्सटेंशन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एलेबरेट कर दें बच्चों के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन सीरीज ए, बी एंड सी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंडिंग एंड प्री सीड फंडिंग. जी, सो एज आई मेंशन्ड कि सीड फंडिंग बहुत इनिशियल स्टेज पे होती है. जिस तरह आपने अगर कोई पौधा उगाना होता है तो आप सबसे पहले उस पौधे का बीज बोते हैं, आप उसका सीड जो है वो ग्राउंड में डालते हैं.
सो सिमिलर कॉन्सेप्ट कि जब आप बहुत अर्ली स्टेज पे हैं, आपके यूजर बेस है, मे बी रेवेन्यूज भी नहीं है, और उस टाइम पे जो आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है, दैट इज रेफर टू एज द सीड इन्वेस्टमेंट. एक और टर्म होता है, उसको प्री सीड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. सो अगेन दीज आर जस्ट कैटेगरीज दैट हैव बीन डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के जी प्री सीड लिटरली आइडिया स्टेज, देन कम सीड. अगर आप सीड स्टेज पे पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट वर्किंग प्रोटोटाइप जो बना दिया, और उसके बाद शुरू होता है सीरीज ए बी सी डी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So when you reach the series stage, that means that number one, you have either already raised a pre-seed or seed investment, and secondly, जो आपकी series बढ़ती जा रही है, जो आपका ticket size होता है, जो आपकी investment की amount है, वो भी बढ़ती जा रही है. अब for example, there are a lot of startups in Pakistan जो कि माशाल्लाह series B, C तक भी पहुंच गए हैं, and then they're not talking about $100,000 or $500,000. They're literally talking about millions of dollars. Why? Because they're at that stage of growth where a smaller amount of money will do them no good. वो सिर्फ अपनी equity dilute कर देंगे उसके बदले में. But what they need is heftier chunks of money, for ideally smaller chunks of equity that they give out. So the natural progression of investment should be ke pre-seed, seed, series A or B, C and so on. However, please let me clarify कि अगर आपको प्री सीड नहीं मिली इन्वेस्टमेंट, तो आप सीड भी उठा सकते हैं. अगर आपको सीड नहीं मिली तो आप सीरीज में भी जा सकते हैं. However, the series are progressive. वो फिर एक के बाद दूसरी आती है. That is the reason they're named alphabetically, A के बाद B के बाद C. अच्छा मुगीज भाई, आई जस्ट हर्ड कि जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, दे आर अवॉर्डिंग सम काइंड ऑफ लोन, बहुत माइनर जो उसके ऊपर मार्कअप के ऊपर वो दे रहे हैं. इज दिस इज अ काइंड ऑफ सीड फंडिंग वो कर रहे हैं कि इट्स अ डिफरेंट इनिशिएटिव बाय पंजाब गवर्नमेंट? जी असलैन भाई, so there are a lot of government organizations and government departments, government bodies जो कि इस तरह के loans वगैरह दे रही हैं. कामयाब जवान के नाम से भी एक program है, and then this program that you mentioned. However, so it would not be possible for me to comment on this thing completely because जो अभी आपने mention किया है, I'm not very much up to date regarding that thing. आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिनके अंडर वो लोग जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जो खुद अपना रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए आसान शराइत के ऊपर लोन्स हैं. बट द थिंग इज कि आई हैव नेवर अप्लाइड फॉर सच अ लोन माई सेल्फ, एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीबडी जिसने जिसने लोन अप्लाई किया और उसको मिला हो फॉर वट एवर रीजन. तो इसलिए इस पर मेरा कॉमेंट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा. बट वन थिंग आई कैन एनकरेज इज के instead of going to regular banks or other bodies जो कि आपको loans वगैरह देते हैं, these government bodies they seem like a good place to start looking for a loan. Why? Because एक तो generally loan थोड़ा सा easily sanction हो जाता है provided that they are sold on your idea and the business plan, और secondly कि उसकी शराइत थोड़ी easy होती है कि आपकी वो जो किस्तें होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज होता है वो थोड़ा कम होता है. तो ये सूरत है. That's right. Okay, I got one more question. What advice would you give for someone thinking to start a real estate business? A real estate business, okay. This, this is interesting. So Pakistan, one of the my observation is one of the things that is always considered a safe bet to invest in Pakistan is कि आप real estate में invest कर लें. कोई घर ले लें, उसको रेंट पे चढ़ा दें, constant source of income. कोई प्लॉट ले लें, उसको रख दें 2 साल 3 साल 5 साल बाद दुगनी तिगनी कीमत पे बिक जाएगा. या आप कोई फाइल ले लें जो कि इवेंचुअली प्लॉट के अंदर मटीरियलाइज हो जाएगी. So while I'm not discouraging any of these, but the thing is कि if you have to start a real estate business, सबसे पहली चीज तो ये है कि whichever business that you're starting, whichever initiative that you're taking, आप उसकी market की know-how होनी चाहिए. इसकी target audience कौन है? What is the market like? Is it
hot, is it cold, मैं कहाँ से start करूँ, मैंने किस area को target करना है, etc. So there's a like a multitude of factors. So hypothetically speaking, whoever has asked this question, if that person is interested in opening a real estate business in say their own locality, वो किसी लाहौर के किसी एरिया में रहते हैं, so first of all they have to look at के do they want to which what sort of real estate that they do they want to deal in. Do they want to do commercial, do they want to do residential, अगर वो residential करना चाह रहे हैं, do they want to do plots, do they want to do houses, do they want to do apartments. So once they have got that sorted through their own research, then they start targeting towards that. So उसके अंदर I understand कि initially if you're going to be, अब real estate के भी दो हो सकते हैं. If you're becoming an agent, which is a middle person to connect buyers and sellers, you could do that. Or if you want to start constructing things yourself, वो थोड़ा सा tricky हो सकता है because that requires a bit of large capital for starters. Thank you, Mukesh. Another question is, what is the team engagement or support they will provide, particularly in finance and accounts, for any new startups from Plan 9? Yeah, so those startups which there is an induction process at Plan 9. Those startups which are interested in becoming a part of the incubation center, they apply online. एंड हमारी एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है जो हमारी टीम करती है, और उस शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप्स होते हैं, दे कैन गेट इनवाइटेड फॉर अ 2 राउंड पिचिंग सेशन. पहला राउंड होता है, उसके बाद सेकंड, एंड इफ दे क्लियर बोथ द राउंड्स दे आर इंडक्टेड. हमारा जो साइकिल है, each cycle runs for 6 months, and usually this happens from February till July and then August till January. ये 6 महीने के साइकिल्स होते हैं जो हम साल में 2 दफा करते हैं. The facilities that we provide to the inducted startups is, number one, we provide them workspace. So we have a state-of-the-art co-working space in Lahore at Arfa Software Technology Park, जहाँ पे वो startups जो हैं वो आ सकते हैं. So usually we encourage that the team size of the startups be limited to 4 or maximum 5 people. उसके बाद the second thing that we provide them with is mentorship. So जो startup जिस domain में काम कर रहा है, over the years we built a network of mentors who are industry experts with 10 years, 15 years of experience. These people work with us without pro bono, without any cost, without any charges. So it is their way of giving back to the startup community. तो हम startup को एक mentor, dedicated mentor जो है वो assign कर देते हैं, जो कि उनका mentor, teacher, guru, जो मर्जी कहना चाहे वो बन जाता है, और फिर वो startups को guide करता है हर step of the way. We have free legal consultancy within in-house. We have a team of lawyers who work with us, और वो startups को guide करते हैं regarding registration process, partnerships, equity dissemination, etc. In addition to that, there is a structured curriculum जिससे हम startups को गुजारते हैं. उसमें trainings भी होती हैं, workshops भी होते हैं. वो हमने इस point of view से design किया हुआ है कि किसी भी startup को starting from scratch till a sustainable stage, कौन सी skills required होती हैं, तो उनकी basis पे हमने वो trainings और workshops का curriculum जो है वो design किया है. Lastly, another thing that we provide them with is networking opportunities. So any startup that comes to Plan 9, because alhamdulillah Plan 9 is mashallah 8 years old, or we have a sizable presence within Pakistan, particularly as an incubation center. तो हम उन startups की networking करते हैं within the market. We help them launch if they want, both locally, internationally as well. There is a sizable number of startups जो कि international markets में operate कर रहा है. We have helped them reach global markets as well. So in a nutshell, these are the facilities that we offer at Plan 9. That's perfect. Okay, the next question is, I want to open a software house. So, can Plan 9 help me according to open my software house and help me in getting some funds from the market? Okay, so I think I partially answered this question a little while ago. So
आप सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहते हैं, well and good. If you are raising this question, I am guessing and hoping that you're probably somebody who has a bit of CS or IT background. Even if you don't, that's fine. So every software house has to have a certain project or product कि उसकी स्पेशलिटी क्या है. आप ERP solutions बना रहे हैं, आप apps बना रहे हैं, आप web development कर रहे हैं, कौन सी सर्विस है जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं. So whoever has asked this question, that person has to be um, self-sufficient regarding the skills. उसके अंदर ये skills पहले से मौजूद होनी चाहिए जो कि उन्होंने वो करनी. The next thing is, so trust me when I say this, it doesn't take a lot of money to start a software house. Obviously, if you're going to be the next big thing like NetSol or Systems Limited, उस level तक पहुंचने में थोड़ा सा time चाहिए, थोड़ा सा पैसा भी दरकार होगा. But literally, you can start a software house from the comfort of your home as well. You just build a team and you start pushing those people forward. Sorry, to continue my answer. How do they raise funds regarding the software house? So again, as I mentioned earlier, it's a little difficult to raise funding at the idea stage level, particularly when you're doing something that a lot of all people might already be doing. There are a lot of software houses within the country. There are a lot of similar products that you keep seeing again and again. उसके अंदर कोई भी चीज हो सकती है, etc. So what makes you so unique that the investor will start taking you seriously to invest in you? My recommendation would be that you start focusing on the product right now and then funding a little bit later. That's perfect. Okay, Mukesh bhai, I just got an interesting question that how Plan 9 is different than other incubation center like NIC, Plan X, and Inspire. Okay, so one of the reasons we're different is that we are a lot older than NICs and Plan X and Inspire. एक तो वो चीज होगी. The second thing is that so I'd also like to mention that Plan X is also a sister project. It's a project of Punjab Information Technology Board, but Plan X is not an incubator. Plan X is an accelerator. जो इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंक्यूबेटर के अंदर वो स्टार्टअप्स जाते हैं जो कि अभी आइडिया स्टेज पे होते हैं या बिल्कुल अर्ली स्टेज पे होते हैं, प्रोटोटाइप डिजाइन स्टेज में होते हैं. The concept of an accelerator dictates that it's targeted towards those startups which are at the mid stage, which means that they've already built the product or service, they've launched it into the market, and they're generating revenues off of it. So अगर आप एक incubator को visualize करते हैं as a school, then you can visualize an accelerator as a college or university. That is the difference between an incubation center, incubator, and an accelerator. Coming back to how we're different from the NICs. So according to my knowledge, currently all of the national incubation centers, the NICs, they charge a certain percentage of equity in return for their services. So that is another point of differentiation, that Plan 9 is completely free of cost for the inducted startups. Plan 9 focuses on technology startups only. NICs, National Incubation Centers, they're focused on other non-tech conventional startups as well. Inspire is the incubation center by NetSol. They've been around for a while. I think that they're doing a good job as well. However, I think that they're operating on a slightly smaller scale as opposed to Plan 9. All right, ji, this is another interesting one that I am planning to move to Canada and want to start some food cafe business over there. Can Plan 9 help me in documentation or idea generation, which can I implement when I will be go there? Okay. It's a slightly interesting and tricky question as well. So, number one, the thing is that
if you are moving abroad to any country, so usually the concept of incubators is quite old and has been around internationally for a while. Pakistan ke andar actually this came a little late, and तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर most probably incubators already exist करते हैं. My recommendation would be that you reach out to them initially. Secondly, the thing is, in order to end up in any incubation center, the first thing is that you have to show them an idea that is extremely interesting, unique, and innovative. Okay, either it has not been done before, or even if it has been done before, you're doing it in a completely different way that it catches your interest or it catches your fancy. Now, I personally think that a food business has a lot of potential. हर शख्स के साथ पेट लगा होता है, सबको भूख लगती है, सबने खाना खाना होता है. So that is something that is a basic need. However, what you're pushing, what you're selling, is it wanted in the market? अगर आप बाहर जा रहे हैं, what sort of food are you making? What sort of food are you selling? So that's another thing that you could look towards. How can we help you out in this regard? Well, so we जितने भी startups हमारे पास आते हैं, even for like guidance etc, one thing we encourage them on is कि वो अपनी idea generation खुद ही करें. The reason is that is your idea. You know better कि आप उससे क्या चाहते हैं. We can only guide you in this regard कि अगर आपने destination A से destination B तक जाना है, तो आप ये वाला रूट जो है लें या आप ये वाला रास्ता अख्तियार करें. However, आपने जाना कहाँ पे है, that is up to you to decide. So उसमें हमारी input थोड़ी सी limited होती है, but for good reasons कि आप you conceptualize your own idea yourself. All right. Okay, this is another interesting one. I'm having 10 different startup ideas, but I don't know which one will work and will be successful in the future. What to do? I need your suggestions. Okay, this is a very common problem and dilemma faced by a lot of startups because इतने ज़्यादा ideas हैं, हम किसके ऊपर काम करना शुरू करें. So first of all, if you have multiple startup ideas in your head, congratulations, that is a very very good start. That just shows कि आपका दिमाग जो है वो एक certain तरीके से चलता है, which is called the entrepreneurial mindset. So you have a lot of potential right there. Secondly, you can select your idea based on two things. Number one, किस idea में पैसे सबसे कम लग रहे हैं, because I understand that in order to bring any idea to life, you have to put in a certain amount of finances as well. चाहे वो चंद 100 रुपए हो या चाहे वो चंद लाख रुपए हो, पैसे तो उसके अंदर थोड़े से you have to put in a certain initial capital. So if you're bound by cash, that is one thing. आप वो चीज ट्राई कर सकते हैं जिसके ऊपर कैपिटल कम लग रहा है. The second thing is which idea is going to require the least amount of time to be implemented into reality. क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड में एक सेइंग चलती है, लॉन्च फास्ट एंड फेल फास्ट, कि अगर आपने कोई चीज़ लॉन्च करनी है आप उसको जल्दी जल्दी करें इससे पहले कि आपका कोई कंपेटिटर या कोई और वो चीज़ कर ले. एंड सेकेंडली, गॉड फॉरबिड, इफ यू हैव टू फेल, then you fail fast as well so that you can move on to a different idea or a different thing altogether. आप उस चीज़ के ऊपर बाउंड ना हो जाए, अपना टाइम ज़्यादा टाइम उसके ऊपर ना लगे. तीसरी चीज़ ये है कि तीसरी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन जाती है. डू योर रिसर्च. जौन सा जिस आइडिया की ज़्यादा डिमांड है आप उसको देखें. तो फॉर एग्जांपल, एवरीबडी नोज कि एक साल से कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, हर जगह है. कोविड के दौरान you'd be interested to know that a lot of products और services जो कि e-commerce कर रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है. ठीक है,
Why? Because then people don't have to leave their house and the product or the service gets delivered to them. So अगर आप फूड पांडा की एग्जांपल ले लें, दे हैड अ वेरी गुड रन, दे स्टिल डू के बिकॉज आपका बाहर से खाना दिल चाह रहा है खाने को, बट आप घर से नहीं निकल सकते, या रेस्टोरेंट्स जो हैं वो डाइन इन के लिए बंद है, दे ब्रिंग द फूड टू यू. लॉट ऑफ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स स्टार्टेड देयर ओन ऐप और डिलीवरी सर्विस कि आप इतनी अमाउंट की ग्रोसरी खरीदें, विल डिलीवर इट टू यू फॉर फ्री. The same goes for clothes. So I am aware that a lot of big clothing brands, they launched their websites. अगर उनकी website पहले बनी थी तो उन्होंने उसके अंदर e-commerce का tool जो है वो incorporate कर दिया, so that people can still keep buying from the comfort and safety of their own homes. तो वो आपने ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ है which is trending, या कौन सी चीज़ है जिसको आप utilize कर सकते हैं in order to make it become the requirement of the time and age. All right, Mukesh. Here is one more. That the businesses or startups like before you cap, if they're having all this investment, or because they're decorating all the city around, so what they're investing, they are having these seeds before they starting the business, or they generate an idea and get the money accordingly. Sorry, my internet connection got a little shaky. Could you please repeat the question? Yeah, sure. Maurice, actually, the student he's asking के the idea like before you cap, वो जो उन्होंने अपना business start किया है startup में, तो they are having this particular amount of money with them before starting the business, or they generate the idea and after this they get the seed money. देखिए, सो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़, what are you selling, right? So for example, if somebody has a stall of french fries, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है. उसको पता है कि मैंने एक फ्रायर खरीदना है जो 5-6 हज़ार रुपये का आ जाएगा, मैंने दिन के 2 किलो या 3 किलो आलू पकड़ने हैं और उनको बस दैट्स इट, और मेरा जो भी कुकिंग ऑयल है एटसेट्रा. सो उसकी इन्वेस्टमेंट छोटी है और रिटर्न भी थोड़ा सा छोटा है. वो जो एक साइकिल है कि यू बाय द रॉ मटेरियल, then you develop it into the product or service, you sell it, then you buy the raw material again. वो उसका cycle वो छोटा है. However, is the person who gave the question, asked the question, gave the example of B4U caps. इसके अंदर थोड़ी सी initial capital investment ज़्यादा require होती है. अब again, usually, in fact, almost always the startup is expected to have this financial capital beforehand in their pocket. अब उन्होंने अपनी जेब से उनकी लगाने की रिक्वायरमेंट होती है. फिर मैं उसी बात की तरफ वापस आता हूँ. सम पीपल अपने हो सकता है उन्होंने अपने पेरेंट्स से मांगे हो, अपनी कोई एसेट्स बेचे हो, कहीं से कोई लोन लिया हो, या 2-3-4 दोस्तों को मिलाया हो जिन्होंने आपस में पूल इन किया और वो ये कर रहे हो. सो वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो तो वो वेरी करता है. बट देन अगेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट आल्सो वेरीज, कि अब जो आप जा रहे होते हैं, कोई भी शख्स है जो सिट्टे बेच रहा है, छल्ली बेच रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत लो होगी एज अपोज टू अगर कोई अपनी फ्लीट बना रहा है गाड़ियों की, या इवन एक फ्लीट ऑन बोर्ड लेके आ रहा है, उसको एक टेक सोल्यूशन के साथ लिंक कर रहा है. सो या दैट्स गोना रिक्वायर मोर कैपिटल. वो कैपिटल कहाँ से आता है? वेल, आई एम 99% श्योर वो इन्वेस्टर्स से नहीं आता. व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टर्स very very rarely do they invest at an idea stage. At least वो किसी किस्म की ट्रैक्शन देखना चाहते हैं before they start taking the startup seriously. So अगर किसी स्टार्टअप ने initially launch ही इतने बड़े लेवल से किया है, so that means that they put in some sort of amount, substantial amount from their own pocket. All right, Mughis, we are just having two more questions and then for sure we'll wrap up the session. Okay, this is in particular for IT students. They're saying that we are for IT related students. Would you recommend us as a team, or shall we include
some other persons from different domain as well, like finance or marketing or something like that? Asnan, I would recommend that they definitely include other people as well. उसकी reason ये है कि किसी भी tech startup की दो sides होती हैं. Number one, there's the tech end, and the other end is the business end. If this group of individuals, if they believe कि between them they have the certain skill sets कि tech का knowledge एक के पास है, accounting या finance का knowledge दूसरे के पास है, marketing का तीसरे के पास है, so then they're good to go. However, if they do not have these skills amongst themselves, सारे tech के बंदे या सारे marketing के बंदे या सारे business के बंदे, तो they need to include other people as well. हमारी थोड़ा सा एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है खासतौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में कि वो दोस्त यार मिलके बैठे होते हैं, वो कहते हैं चलो यार हम मिलके कोई अपना स्टार्टअप कर लेते हैं, कोई आइडिया कर लेते हैं. वेल एंड गुड, दैट इज अ वेरी गुड थॉट. हाउएवर व्हाट दे शुड आल्सो बी कीपिंग इन माइंड इज कि आप दोस्ती यारी रिश्तेदारी से ज़्यादा ये देखें कि स्टार्टअप की टीम के अंदर जितने कोर टीम के अंदर जितने लोग हैं, क्या उनके स्किल सेट्स इतने डाइवर्स और डिफरेंट हैं कि वो स्टार्टअप की वर्किंग्स को सही तरीके से हैंडल कर लेंगे. If there are four friends who are all from the IT background, which means that they either have the same skill set or the similar skill set, वो चार बंदे एक ही चीज पे क्यों काम कर रहे होंगे? Why do they not look for other people जो के different skill set लेके आए ताकि जो business end है वो भी cover हो, and vice versa, the same goes for the tech sector as well. So yes, to answer their question, please definitely include one at least, or maybe even two people who can take care of the marketing. Marketing of the startup is very important. Sales are equally important. And then there can be somebody who can look after operations and finance as well. ओके, इसी की एक एक्सटेंशन एक मुझे पूछा है बच्चे ने कि कितने मिनिमम टीम मेंबर हो कि जो आप एक्सेप्ट करती हैं एट प्लान 9? There is no minimum or number, well, maximum है मैं कहने लगा था, but there is no minimum number of team members that we accept. Usually it's two team members. Why? Because one is a techie and the other is a business person. But the average size of the team is 4. अब उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई मार्केटिंग का रोल ले रहा होगा, कोई सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का कर रहा होगा, कोई बिजनेस डेवलपमेंट की लीड्स वगैरह जनरेट कर रहा होगा. There will be might be one person who has assumed the charge of CEO who's giving instructions and guidance to all of them. So we do keep a cap on the maximum number of team members, which is 5, but minimum का there's no limit. Usually 2 ही होते हैं. As long as the startup is fully equipped, चाहे वो 2 team members हैं या 5 team members हैं, the startup is fully equipped to handle the day-to-day operations and ongoing of the startup, including the product development service. That's fine. Thank you so much, Mukesh. I hope it's a great learning experience for all of us and students get a lot of fruitful insight from it. Mukesh, I just need your closing remarks and suggestions and recommendation for our students which are having on the final year, and what you say. Okay. First of all, it was great being here. I would like to thank UMT again for having me over. It's always a pleasure talking to the younger audience because these people are very curious. They have a lot of questions, which I'm happy to answer. And they also have a lot of potential. And somehow I see a bit of my younger self in them as well. My closing remarks would be to give all of the people who are listening a little bit of reality check. Uski reason ye hai कि we're going through very different and difficult times these days because of the coronavirus, and it has affected economies and businesses and startups in a very, very different way. So not a lot of people were prepared for this. So as a result, a lot of businesses have shut down, a lot of startups have wrapped up, a lot of people have been let go from their current jobs, which is completely fine because this is the startup or the business has to sustain itself. However, for the students
who are particularly final year students or fresh graduates and about to go into the job market, please keep this in mind. If you go looking for a job, it's not going to be easy to find one, particularly in these times. So, I mean, I'm not trying to discourage anybody from anything, but if you have time, if you believe that you can spare your time and skill set, why not try doing a startup of your own? Jobs are difficult to come by in the market these days. Please put your time to productive use and start working on an idea. Who knows that you might end up at Plan 9 one day, and inshallah make it big from here onwards. OCLP always been engaged with Plan 9 with the different sessions and in tech study tours, and we hope we'll having more engagement in the future. Thank you once again, Maurice, for your time, and it's an wonderful thoughts we have shared and our Q&A sessions. So thank you, Maurice. Thank you, everyone. Thank you, Snan. Thank you for having me over. I'd like to thank all of the people who tuned in as well. It was great being here. I wish you all the very best. Thank you, Maurice. Have a good day.